So students, now we are going to discuss some definition. Question is asked, define and explain enthalpy of fusion, or define and explain enthalpy of freezing, define and explain enthalpy of vaporization, define and explain enthalpy of condensation. So these two processes are opposite. Fusion and freezing is opposite. Vaporization and condensation is opposite. So what is their definition and their explanation? Look at this. Enthalpy of fusion can be defined as the enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is called as enthalpy of fusion. For example, H2O solid means ice. It is in a solid state. How many moles? 1 mole. It is converted into H2O liquid. Solid, 1 mole of solid is converted into 1 mole of liquid at constant temperature, means at 0 degree Celsius. Then positive 6.01 kilojoule into mole inverse energy is absorbed. You know that ice is solid. Suppose you are taken the cube of ice from the refrigerator and place in one pot. What happened after some interval of time? It absorbs the heat energy from the surrounding and it begins to melt. Okay? But temperature of ice is suppose -4. After that it become -3, -2, -1, then 0. Okay? So temperature of ice is now 0, means at 0 degree Celsius, solid is converted into liquid. The ice is converted into water and you are measuring the temperature, it is 0 degree. Temperature is constant and pressure is also constant, 1 atmospheric pressure. In an open vessel, it experiences 1 atmospheric pressure. Means when 1 mole of solid is converted into 1 mole of liquid, then there is an enthalpy change. Heat is absorbed, means enthalpy is increased. Heat is released, means enthalpy decrease. So enthalpy change when 1 mole of solid is converted into liquid at constant temperature and pressure, then that enthalpy change is associated with that fusion or with that freezing. That is called as enthalpy of fusion. Fusion means solid is converted into liquid. So definition is that the enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature and at constant pressure is called as enthalpy of fusion. Example, H2O solid means ice converted into H2O liquid, delta fusion H, delta H, but its FUS means fusion, solid converted into liquid, positive 6.01 kilojoule into mole inverse at 0 degree Celsius. हम जब आइस को लेते हैं उसका टेम्परेचर -3, -2 कुछ तो भी रहेगा. उसको हम जब रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं उसके बाद उसको अगर रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो एटमॉस्फेयर की जो हीट है वो एब्सॉर्ब करने लगता है. इसका मतलब उसकी एंथैल्पी बढ़ने लगती है. बराबर. धीरे 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 उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, -3 से -2 आएगा, -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा. उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं. फिर सॉलिड का कन्वर्शन धीरे धीरे कहाँ पे होगा? लिक्विड. टेम्परेचर अगर तुमने मेजर किया वहां पे थर्मामीटर डाल के तो 0 ही रहेगा. कब तक? पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक. उसके बाद उसका टेम्परेचर 1, 2, 3, 4 रूम टेम्परेचर तक के बढ़ेगा. लेकिन एंथैल्पी चेंज हो गया. किसका? 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसको कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसके लिए वो जो आइस है 6.01 किलोजूल हीट क्या करता है? एब्सॉर्ब. डेल्टा H कैसा है? पॉजिटिव. इसका मतलब हीट क्या हो गई? एब्सॉर्ब. उसके अपोजिट फिनोमिना है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट occurs when 1 मोल ऑफ सॉलिड की जगह पे आएगा 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. फ्रीजिंग है, हमने 1 मोल वाटर लिया है और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया है. उसका टेम्परेचर 25 रहेगा, बढ़ते 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 जाएगा, 0 आएगा. जब उसका टेम्परेचर 0 आएगा तब H2 लिक्विड का कन्वर्शन H2 सॉलिड में होगा. तो वो जो हीट है
उसको रिलीज करनी पड़ेगी। आइस का कन्वर्शन वाटर में होता तो हीट क्या होती है? एब्सॉर्ब। जब वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो हीट क्या होती है? रिलीज। जब भी 6.01 हीट एब्सॉर्ब हुई, अब 6.01 हीट क्या होगी? रिलीज। टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है। हो गया? इसके पहले क्या हुआ? सॉलिड आइस का कन्वर्शन लिक्विड वाटर में हुआ। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर कितना है? 0। अब उसके अपोजिट फिनोमिना है। 1 मोल लिक्विड लिया है, वाटर लिक्विड है, उसका कन्वर्शन 1 मोल सॉलिड में हो रहा है, तो टेम्परेचर भी वही है 0 डिग्री और प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। आ गया ध्यान में? फ्यूजन यानी सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में एंड फ्रीजिंग यानी लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में। अपोजिट फिनोमिना है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव 6.01, यहाँ पे डेल्टा एच माइनस 6.01 बिकॉज अपोजिट फिनोमिना। क्लियर? उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मींस क्या? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, वो ऐसे होगा क्या? नहीं, वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, उसका एंथैल्पी बढ़ेगा, फिर लिक्विड का क्या होगा? वेपर में कन्वर्शन। सो इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड की जगह क्या आएगा? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। वेपराइजेशन में लिक्विड का कन्वर्शन कहां होगा? गैस। फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड और फ्रीजिंग में लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड। हो गया? वेपराइजेशन में क्या होगा? लिक्विड का कन्वर्शन गैस और वेपर्स में होगा और उसका टेम्परेचर, अब लिक्विड का अगर गैस में कन्वर्शन होगा टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री रहेगा। देखो यहाँ पे इसने हमने 100 डिग्री की जगह यहाँ पे पॉजिटिव 40 किलो जूल ले लिया। H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड टू H2O गैस। डेल्टा वेपराइजेशन पॉजिटिव 40 किलो जूल टू बोला 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग और फ्यूजन में टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री 0 डिग्री। हो गया? अब वेपराइजेशन में टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट इज कन्वर्शन that is called as the vaporization. Clear? So how can you define enthalpy of vaporization? It is the enthalpy change when 1 mole of liquid is converted into 1 mole of gas at constant temperature and pressure. So this is the example, H2 liquid is converted to H2 gas. लिक्विड का कन्वर्शन अगर गैस में करना तो हीट एब्सॉर्ब होगा, इसलिए 40 किलो जूल हीट क्या हो गया? एब्सॉर्ब। बट टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया? उसके बाद लास्ट टर्म है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, बारिश आती है वो कंडेंसेशन से आती है। जो वेपर्स रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं, वो पहले सी के समुद्र के ऊपर तैयार होते हैं और इधर आते हैं, वहां पे ठंडे होने के बाद उसका कन्वर्शन होता है वाटर में। पहले क्या देखा? वेपराइजेशन यानी लिक्विड का कन्वर्शन हमने गैस में किया, वेपर्स किए। जब समर रहता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर के वेपर्स होते हैं, वो क्या हो गया? वेपराइजेशन। अब वो वेपर क्या होंगे? ठंडे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हो गया? इसके अपोजिट H2 लिक्विड, H2 गैस। अब क्या लेंगे? H2 गैस, H2 लिक्विड। ये पॉजिटिव 40 था, ये क्या हो गया? नेगेटिव 40, बट टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ कैन वी डिफाइन? It is the enthalpy change when 1 mole of gas is converted into liquid at constant temperature and pressure. H2O gaseous converted into H2O liquid. Delta condensation H is negative because जब कंडेंसेशन होता है तो उसको ठंडा होना पड़ता है, ठंडा होने के लिए हीट क्या होती है? रिलीज। वेपराइजेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, हीट एब्सॉर्ब होती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? So we have seen 4 definition. First is enthalpy of fusion. How can you define? It is the enthalpy change when 1 mole of solid is converted into liquid at constant temperature and pressure. Example लेंगे H2O solid, H2O liquid.
उसका डेल्टा फ्यूजन इज पॉजिटिव 6.01 है. ओके, उसके अपोजिट में दूसरी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. हाउ कैन यू डिफाइन? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर. H2O liquid converted to H2O solid. डेल्टा फ्रीजिंग H ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया नेगेटिव -6.0. उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर. H2O liquid, H2O gas. डेल्टा वेपराइजेशन पॉजिटिव 40 किलो जूल into molarity at 100 degree Celsius. और लास्ट है enthalpy of condensation. So it is the enthalpy change when 1 mole of condensation है, क्या आएगा condensation का, gas is converted into liquid at constant temperature and pressure. H2O gas, H2O liquid, delta condensation H, ये positive तो नहीं, क्या हो गया negative. So that's all about all the 4 definition. Its definition and explanation is very important. They are asking for the 2 marks. Define and explain the following terms: enthalpy of fusion, enthalpy of condensation, 2 marks. Enthalpy of freezing, enthalpy of fusion, 2 marks. Or 3 marks: enthalpy of fusion, enthalpy of freezing, and enthalpy of vaporization. So that's all about this definition and the explanation. We will see the next part in the next video.